Hello kids. Today we are starting with third part of chapter 1 knowing our numbers. Part 2 और part 1 हम अपने पिछले वीडियोस में कंप्लीट कर चुके थे. Now the third part, or we can say the third topic, is estimation. In general language, estimation is also called round off. If a number is less than 5, it is rounded off to lower tens. जैसे अगर आपके पास कोई नंबर है 11 तो उसे राउंड ऑफ करके आप 10 लिख सकते हैं, या आपके पास कोई नंबर है 92 तो उसे आप राउंड ऑफ करके 90 लिख सकते हैं. यानी कि वो नंबर जो 5 से छोटा है वो 0 पे राउंड ऑफ होता है, या हम कह सकते हैं लोअर टेंस पे. Let us see few examples. 272. If we are rounding off to nearest 10, we get 270. 319. Rounded off to nearest 100, we get 300. In nearest 100, we have to see the last two digits. इसमें last two digits में है 19. 19 50 से छोटा है, इसलिए वो 0 बन के 300 हो गया. Next, 8111. Here we are rounding off to nearest 1000. So we have to see the last three digits. It is 111. 500 से छोटा है, इसीलिए राउंड ऑफ होकर ये बन जाता है 8000. Now, if a number is more than or equal to 5, it is rounded off to higher tens. मतलब कोई नंबर 5 या उससे बड़ा है तो वो अगले नंबर को राउंड ऑफ कर देता है. जैसे अगर आपके पास कोई नंबर है 16, उसे आप राउंड ऑफ करेंगे तो वो बनेगा 20. इसी तरह से हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. The first example is 279. इसमें हम नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ कर रहे हैं, यानी कि 79 को आपको राउंड ऑफ करना है टू 80. If we have 289 and we are rounding off to nearest 100, नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ करना है. 89 50 से बड़ा है, इसीलिए ये राउंड ऑफ होकर बन जाएगा 300. क्योंकि इसमें हायर टेंस पे जाता है तो वो डिजिट्स तो 0 बन जाते हैं और उसका जो पहला नंबर है वो 1 डिजिट बड़ा हो जाता है. The next number we are taking is 8999. It is rounded off to 9000 when we are rounding off to nearest 1000. एस्टिमेशन के रूल्स तो आप पिछली क्लास में पढ़ ही चुके थे और आपको याद भी होंगे. Now this year we'll be using estimation for addition, subtraction and multiplication. अगर आपको कोई दो नंबर्स या तीन नंबर्स को ऐड करना है यूजिंग एस्टिमेशन, सो आप पहले उन नंबर्स को एस्टिमेट करेंगे. दैट मीन्स फर्स्ट यू विल राउंड ऑफ एंड देन यू विल ऐड. लेट अस टेक वन एग्जांपल. जैसे अगर हमें 180 प्लस 192 करना है तो 180 राउंड ऑफ होकर हो जाएगा 200. इसी तरह से 192 भी राउंड ऑफ होकर हो जाएगा 200. और अब राउंडेड ऑफ जो दो नंबर्स थे उनको हम प्लस करेंगे तो 200 प्लस 200 वी आर गेटिंग 400. सिमिलरली सब्ट्रैक्शन कैन बी डन यूजिंग एस्टिमेशन. रूल वही रहेगा, पहले आप एस्टिमेट करेंगे. एस्टिमेशन मीन्स राउंड ऑफ. सो फर्स्ट यू विल राउंड ऑफ एंड देन यू विल सब्ट्रैक्ट. नाउ मल्टीप्लिकेशन यूजिंग एस्टिमेशन. मल्टीप्लिकेशन में भी आप पहले नंबर्स को एस्टिमेट करेंगे. That means first you will round off the numbers to nearest 10 or nearest 100 or nearest 1000, whichever is asked in the question. Question में specified रहेगा अगर तो आपको उसी में round off करना है, और अगर specified नहीं रहता है so you can round off to nearest 100 or 1000. So for that we have taken an example of 216 multiplied by 995. 216 when it is rounded off to nearest 100 we get 200. क्योंकि 16 50 से छोटा है इसलिए वो राउंड ऑफ होकर 0 हो जाता है. So 216 is rounded off to 200. 995
95 50 से बड़ा है, इसलिए राउंड ऑफ होके वो हायर नंबर पे जाता है, तो इट बिकम्स 1000. अब 200 और 1000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी विल गेट 2 lakh. Okay, so we can add, we can subtract and we can multiply using estimation. Now, based on the topic of estimation, we have to start exercise 1.3. Question number 1. Estimate each of the following using general rule. Here we have 4 parts. Let us start with the answer of the first part. First part mein, the question was 730 plus 998. पहले हमने 730 को राउंड ऑफ किया to 700. Then 998 is rounded off to 1000. Now we have to add them. 700 plus 1000. So estimated sum will be 1700. B part 796 and 314 were given. So 796 is rounded off to 800 and 314 is rounded off to 300. और इसमें हमें माइनस करना था, so estimated difference is of 500. क्योंकि 800 में से हमने 300 माइनस किया तो हमें मिलता है 500. C 12,904. It is rounded off to 13,000 and 2,888 is rounded off to 3,000. The estimated sum is 16,000. 13,000 plus 3,000 gives you 16,000. D 28,292 is rounded off to 28,000. 292 is smaller than 500, इसीलिए ये 28,000 पर राउंड ऑफ हो जाता है. The next number is 21,496. 496 भी 500 से छोटा है, इसीलिए ये राउंड ऑफ होकर बन जाता है 21,000. The estimated difference is of 7,000. क्योंकि 28,000 minus 21,000 gives you 7,000. Question number 2. Here, first you have to find rough estimate. Rough estimate में you have to round off to nearest 100 and then you have to find a closer estimate. Closer estimate में आपको nearest 10 पे round off करना है. Here also we have 4 parts. Let us start with the first part. First part में the numbers are 439 plus 334 plus 4,317. इन तीनों नंबर्स को पहले हम नियरेस्ट 100 पे राउंड ऑफ करेंगे. 439 will be rounded off to 400, 334 is rounded off to 300 and 4,317 is rounded off to 4,300. अब इन तीनों को हम प्लस करेंगे, so estimated sum is 5,000. This was a rough estimate. Now we have to move to a closer estimate, जिसमें हमें इसे nearest 10 पे round off करना है. So 439 will be rounded off to 440, 334 is rounded off to 330 and 4,317 is rounded off to 4,320. अब इन तीनों को हम ऐड करेंगे, so estimated sum is 5,090. जब हम rough estimate निकालते हैं तो it is approximately 5,000, but a closer estimate is giving you 5,090. Now let us move on to B part. B part. The numbers are 1,08,737 minus 47,599. सबसे पहले हम एक रफ एस्टिमेट निकालेंगे by rounding off to nearest 100. 1,08,737 is rounded off to 1,08,700. 47,599 is rounded off to 47,600
and the estimated difference is 61,100. अब एक closer estimate निकालेंगे by rounding off to nearest tens. 1,08,737 is rounded off to 1,08,740. 47,599 is rounded off to 47,600 and the estimated difference is 61,140. इसी तरह से हमें सी पार्ट में भी सॉल्व करना है. The numbers are 8,325 minus 491. सबसे पहले nearest 100 पे राउंड ऑफ करके we will find the rough estimate. 8,325 is rounded off to 8,300 and 491 is rounded off to 500. अब इसे माइनस करेंगे. On subtracting, the estimated difference is 7,800. Now we have to find a closer estimate by rounding off to nearest tens. 8,325 is rounded off to 8,330. 491 is rounded off to 490 और इनको subtract करेंगे, so estimated difference is 7,840. D. 4,89,348 minus 48,365. First, we have to find a rough estimate by rounding off to nearest hundreds. 4,89,348 is rounded off to 4,89,300. 48 is less than 50, so it is rounded off to zeros. इसीलिए 348 जो है round off होकर 300 बनता है. Then 48,365 is rounded off to 48,400. इसमें 65 50 से बड़ा है, इसीलिए 365 round off होकर 400 हो जाता है. Now we have to subtract. जब हम minus करेंगे, so estimated difference is 4,40,900. इसके बाद we have to find a closer estimate by rounding off to nearest tens. 4,89,348 is rounded off to 4,89,350. 48 है, 8 5 से बड़ा है, इसलिए 48 round off होकर 50 हो जाता है. And 48,365 is rounded off to 48,370. 65 round off होकर 70 बनता है. Now you have to find the estimated difference. It is 4,40,980. Question number 3. Estimate the following products using general rule. जैसा मैंने आपको बताया था कि पहले आप इसे राउंड ऑफ करेंगे और उसके बाद मल्टीप्लाई. So A part 578 multiplied by 161. सबसे पहले हम 578 को राउंड ऑफ करेंगे to 600 क्योंकि 78 50 से बड़ा है, इसलिए ये नेक्स्ट नंबर पे राउंड ऑफ हो जाता है. So 578 becomes 600 and 161 is rounded off to 200. अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, so estimated product is 600 multiplied by 200 is equal to 1,20,000. B. 5,281 multiplied by 3,491. सबसे पहले हम राउंड ऑफ करेंगे, so 5,281 is rounded off to 5,000 and 3,491 is rounded off to 3,500 and then we will have to multiply. So on multiplying, the estimated product is 1,75 lakh. C part 1,291 multiplied by 592. On rounding off, 1,291 is rounded off to 1,300 and 592 is rounded off to 600. Estimated product is
1300 multiplied by 600 and we get 7,80,000. D. 9,250 multiplied by 29. 9,250 is rounded off to 9,000 and 29 is rounded off to 30. इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे so estimated product will be 9,000 multiplied by 30 so we get 2,70,000. So this completes our exercise 1.3 and this was the last exercise of the chapter. इसके बाद हम अपने अगले टॉपिक में पढ़ेंगे रोमन नंबर्स के बारे में. वो मैं अपने अगले वीडियो में डालूंगी. Until then, bye.